All right, so we had so we were talking about the grid world. देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन इक्वेशंस है, आई मीन दिस ट्री एंड द इक्वेशंस corresponding to it. Okay, so we had talked about these things. देखो, I don't know about you, but I have had very much confusions on these topics. What do you mean by value? And that's why I keep repeating them, because yes, what do you mean by value? What is value? See, why do we need a value? Why do we need to define value in whatever sense we have defined? नहीं, मतलब ये कंफ्यूजन्स है कि नहीं है कि मैं जबरदस्ती अपनी तरफ से ही बना के एंड यू नो, सो डू यू सी कि वैल्यू एंड ऑल दीज थिंग्स दे डोंट मेक मच सेंस. आई मीन एटलीस्ट आई डोंट फील एट होम विद देम, नॉट दैट मच, राइट? व्हाई डू वी हैव दोज वैल्यूज? But then if what I want is policy and not values, why care about them? देखो, you need values because you are dealing with algorithms, right? You want to do something. So what is it that we want to do? We want to maximize our expected utility, right? But are we really that much interested in that utility? Not per se, because this utility is being defined by you, right? So defining that utility itself is sometimes very hard. Now what we are saying here is we require those numbers because we want to put some kind of ordering. Some state is good, some is bad, so you need numbers there. If a number is better somewhere, you say this is better in some sense, and so on. So you want to put some orderings, you want to design algorithm, so you need numbers. So that's why we have those values. Now what is it that we care about? That what is it that is given to us and we are done? That's a policy. So we care about a policy much more than values. Even if you don't give me any value, मेरे को कोई number मत दो, but if you give me policies, am I done? So if somebody comes and gives you, see, this is the optimal policy, do I really care कि कहाँ पे क्या number है? I don't really care. But you require those numbers to be able to compute these policies, right? Because they give you some kind of ordering. Now what is policy evaluation now? So policies can be really huge, right? How many total policies will be here? We have done these things before. हर एक स्टेट में जाके देख लो how many actions you can take. So total number of actions that you can take to the power state, that will roughly give you the total number of policies possible. So that space is also huge. Now you want to figure out the best policy, the optimal policy among so many possibilities. So we need to do policy evaluation. What was policy evaluation? Given a fixed policy, okay, so if we fix some policy, then the tree would be simpler, okay, and now utilities for a fixed policy, we had talked about this thing as well. So we require these numbers because we want to put some kind of ordering. Now policy evaluation, so this policy says always go right, this policy says always go forward. Now we had seen that in terms of these numbers, this policy is actually better than that one. Okay,
And why don't we have order S square A here? That was an important thing you should know. Alright, so we were talking about policy extraction, I think. Okay, we had talked about that as well. Computing actions from Q values. Right, so this is where we were. So we require values, we require Q values. How are values and Q values related? So values are just max over Q values, okay, and where we know. So where do we max over Q values? जहाँ पे S है, then S has so many Q states, right, leading to that. So all those पे आप max करोगे, you will get the value of V. How do you get the values of these Q star? हर एक चांस नोड पे, हर एक Q स्टेट पे you have many successors, many children. So one of these is going to, I mean, you take basically expect max over all this. Sum कर लो, what was that equation? Bellman equation वाली, which was R plus gamma times next state, and then इसको multiply कर दो with the probability of that state, sum over all the states that are possible from this particular Q state. Okay. Now policy iteration. So problems with value iteration. Value iteration repeats Bellman updates. Problem 1, it's slow, order S square A. So you have an extra factor of A sitting there. Problem 2, the max at each state rarely changes. The policy often converges long before the values. We have seen almost all of it in distinct places. So order S square A, why was that order S square A? Because for every state you have A actions. Okay. Now how does, so this says problems with value iteration. So how does policy iteration try to address that? No. So why we don't have this factor of A for policy iteration? This is the question, right? Okay. Because we are extracting action from the. अच्छा, ऑर्डर S स्क्वायर A कहां से आ रहा था भाई? Different actions per state. Every state leads to other states. So it was from states you can go to states. So S square that comes, okay. But why A? Because in every state you can take A number of actions. So order S square A. Now it says it is slow. So something must go away. We have seen in last slide that this A goes away in policy iteration. So it's slow. The max at each state rarely changes. The policy often converges long before. So what might this line mean? देखो, एक बार इधर आओ, एक बार इधर आओ. So when you start, these values might change, okay, but what that line means here is, for example, you are here. Suppose करो this 0.7 minus 0.62, 0.89, 0.76. They might change, okay, but do you think they will change in a manner कि इनका order change हो जाएगा? Of course they can, of course they can, but will that be a usual case? देखो, यहाँ पे look at Q values. Which one is max? 0.89. Now let's say these values change, right? How will they change? Will they change in a manner कि भी 0.89 कम हो जाएगा and this particular thing becomes, let's say, 0.97. It may happen, but usually it doesn't happen, right? And what do you actually care about? These numbers as such,
or which action? Relative, right? So if this was high almost in, let's say, first 5 iterations, first 10 iterations, most likely this will be max in the rest of the iterations as well. This number itself might change, but what we care about when we are talking about policy, what is it that we care about? Which action should I take? So ये number 0.89 था, 0.78 था, whatever it is, right? If it is greater than everyone else right now, then this is what I care about, because I'm choosing over max. I don't care कि number क्या था. Okay? So this is what this particular thing says. This one, policy often converges long before the values. ये तो अपन example के through देखा था. What was this? So हमने देखा था कि at k equal to 12 there were some numbers, k equal to 13 some numbers, and then we saw after 15, 16, even for k equal to 100 numbers were the same. Okay, why is it so? Why numbers are same after so many iterations too? See that same thing, that infinite series comes in. Usually ऐसी जो अपनी series होती हैं, which term gives you the maximum proportion in the sum? Let's say if you are summing a GP, you are summing a infinite GP. इस sum में सबसे ज्यादा contribution usually कौन सी term का होगा? Usually the first one, and then उससे कम second. And as you go in this particular GP, the effect of the remaining terms diminishes. So that is the same logic. यहाँ पे क्या हो रहा है कि even if you run it for so many iterations, उनका जो sum होगा, most likely that will not be significant, probably will not change many things. Okay? Now what was policy iteration? So again that same example, first time, and you keep on doing it. So numbers are hardly changing, and they don't change to k equal to 12, ये 0.48 हो गया, 0.43 हो गया, बाकी things have not changed that much. Now policy iteration. Alternative approach for optimal values. Step 1, policy evaluation. Calculate utilities for some fixed policy, not optimal utilities, until convergence. Policy improvement. Update policy using one step look ahead with resulting converged utilities as future values. Repeat steps until your policy converges. So this is policy iteration and can converge much faster under some conditions. Okay? What was value iteration? Value iteration क्या था? So you were iterating over values, but किस चीज को, किस values को iterate कर रहे थे? जब आप वैल्यू इटरेशन में अपडेट कर रहे हो तो व्हाट इज इट दैट यू आर अपडेटिंग? स्टेट्स की वैल्यूज. कौन सी स्टेट्स की वैल्यूज? लुक एट दैट अगेन. वैल्यू इटरेशन है, राइट? अभी बताओ कौन सी स्टेट की वैल्यू चेंज कर रहे हो? See, there it is fixed. Somebody tells you this is the reward, so that's not going to change. Okay? What about other states? आप कौन सी स्टेट की वैल्यू चेंज कर रहे हो वैल्यूटेशन में? All the states. Okay? So वापस देखना है यहां पे k equal to 6 से we are at k equal to 6, we go to k equal to 7, many are changing.
So in every iteration you are changing values for every state, all states. Okay. So पॉलिसी इटरेशन में अपने को क्या करना है? वैल्यू इटरेशन में you are changing values of all states, keep on doing this for very long, they will converge and that is how you stop. Right? What do you mean by converge? कि अब values change नहीं हो रही है, और even if they are changing after long iterations and by very small value. So that's our convergence. Now that was for value. अब policy के लिए आप क्या करोगे? So what will be policy iteration? Calculate utilities for some fixed policy until convergence. What might this mean? Is this fixed policy optimal? यहाँ पे लिखा हुआ है not really optimal. Okay? Until convergence. Policy improvement. Update policy using one step look ahead with resulting converged but not optimal utilities as future values. What does this mean? आप policy को iterate करोगे कैसे? Until their values become same, until different iterations values. देखो पॉलिसी में व्हाट इज इट दैट यू आर कीपिंग ट्रैक ऑफ? हर एक स्टेट पे क्या एक्शन लेना है. ओके, व्हाई डू वी वांट टू डू पॉलिसी इटरेशन? सी आई स्टार्ट विद अ रैंडम पॉलिसी. व्हाई डू आई वांट टू इवेल्युएट एंड इटरेट ओवर इट? नहीं, see we start with a policy, that means we start with a random policy जिसमें कोई भी हर एक स्टेट के लिए मेरे को एक्शंस मैंने चूज कर लिया, and it was random so I don't really know, I mean I'm reasonably sure कि this is certainly not optimal. Okay, अब मेरे को ये बताओ what do I mean by policy iteration? What will happen in the next, after I'm done with this iteration, what will I get in the next iteration? बट विच वैल्यूज? वैल्यूज तो अभी नहीं है अपने पास. पॉलिसी में आपके पास क्या है? एक्शंस दैट आई शुड टेक ऑन ईच स्टेट. सो दिस इज व्हाट आई बिगिन विद. मेरे पास नेक्स्ट इटरेशन में क्या होना चाहिए? So right. So what should I do in policy iteration? My policy will change. I started with this. Next iteration पे I will have a different policy. Next iteration पे I will have a different policy. And उधर मैं converge कर रहा था values में. Values were not changing. इस केस में क्या होगा? Actions will not change after convergence. Okay? Now वो जो 3 slides थी जहां पे compare कर रहे थे कि complexity is order s square a and what else? और 2 पॉइंट्स क्या थे भाई? पॉलिसी कन्वर्जेस बिफोर दी वैल्यूज एंड दैट मैक्स हार्डली चेंजेस. अब इस सबको, दोनों चीजों को एक बार कनेक्ट करो. वैल्यूज कहां से आ रही हैं? क्यू वैल्यूज से. सो व्हाट डज इट मीन टू से दैट मैक्स हार्डली चेंजेस? Actions remain the same, that is वो जो max की वैल्यू है, if it corresponds to a particular action, it might change, but it will still remain the action remains the same. Okay? What was the last thing? Policy converges much before the values do. So all of these are suggesting कि we should do policy iteration because time complexity कम है, right? उधर वैल्यूज चेंज अगर हो भी रही हैं, दे आर नॉट रियली गिविंग यू एनीथिंग. इन द एंड व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन इज अ पॉलिसी. ओके, एनी क्वेश्चंस? भाई देखो, आई गॉट अ फीडबैक फ्रॉम योर सीनियर्स कि सही नहीं चल रहा है कोर्स. ओके, सो इट्स बेटर इफ इट कम्स फ्रॉम यू. हाँ,
सो आई मीन आई नीड टू नो कि क्या गड़बड़ चल रही है. हाँ, no, it's okay. So how many of you don't? So let me put it this way. कितने लोगों के हिसाब से सही नहीं चल रहा है? Don't worry, it's okay. No matter what you say, it's okay. कितने लोगों के हिसाब से सही चल रहा है? Okay, that gives me confidence. So, those who didn't raise hand, maybe they can meet me after the class. Okay. So, I mean, of course, if you have something to say, if you don't have something to say, then fine. Chalo. So, update policy using one step look ahead with resulting converged utilities as future values. What is this one step look ahead? Bellman equation. S से S prime पे जाने वाला. Okay. And repeat steps until policy converges. So, for fixed current policy pi, find values with policy evaluation. Iterate until values converge. Improvement for fixed values, get a better policy using policy extraction. One step look ahead. This is basically nothing but coming from our Bellman equations. अब यहाँ पे क्या चल रहा है? We need to understand these particular variables. What is V pi I k plus 1s? See, what does this notation mean? So, value at S according to policy pi I, and this is my iteration number. Okay. So, that I can write in terms of the next one. अपन इसको कैसे लिख रहे हैं? Y k plus 1 there and Y k here. Because you are starting from V0 to V1 to V2 and so on, so you are coming bottoms up. Now, so iterate until values converge. What does this mean? You are evaluating policy for fixed current policy pi. Find values with policy evaluation. Iterate until values converge. ये कितनी चीजों के लिए करोगे? ये वाला computation? All states. ये वाली इक्वेशन जो आप कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर ऑल दी स्टेट्स. दैट्स व्हाई इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन, क्योंकि आप सारी की सारी स्टेट्स के लिए कर रहे हो. ओके, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस वन एनी मोर. मे बी दिस पार्ट. व्हाट इज दिस? देखो यहां पे नहीं, प्रीवियस पॉलिसी नहीं बचे. पाई आई सेम. ओके, सो इंप्रूवमेंट फॉर फिक्स्ड वैल्यूज, गेट अ बेटर पॉलिसी यूजिंग पॉलिसी extraction. What was policy extraction? So you are given numbers and you want to extract कि what are these numbers implying, कि मेरे को कौन सा एक्शन लेना चाहिए कौन सी स्टेट में. So for fixed values, get a better policy using policy extraction. One step look ahead. अब मेरे को समझाओ, how are we connecting this? How इंप्रूव कैसे कर पा रहे हैं? ओके, मेरे को थोड़ा सा और अच्छे से समझाओगे, कम समझ में आता है. नहीं, माय क्वेश्चन इज जस्ट दिस. व्हाट डू यू मीन बाय इंप्रूवमेंट? क्या देखो यहां पे लिखा हुआ है, फॉर फिक्स्ड वैल्यूज गेट अ बेटर पॉलिसी यूजिंग पॉलिसी एक्सट्रैक्शन. व्हाट डज दिस मीन? देखो आपके पास एक पॉलिसी थी, राइट? नाउ व्हाट इज फिक्स्ड वैल्यूज? Fixed values. Fixed values does not mean fixed action, does it? देखो
स्टेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं वहां पे जो एक्शन ले रहा हूं दैट मे और मे नॉट बी गुड. सो व्हाट दिस पर्टिकुलर लाइन इज सेइंग इज आपके पास वैल्यूज हैं, दैट मीन्स यू कैन गेट गुड डायरेक्शंस, यू कैन गेट गुड पॉलिसी फ्रॉम दैट दोज वैल्यूज. तो आपके पास करंटली जो वैल्यूज हैं उनसे आप पाई, बेस्ट पाई को एक्सट्रैक्ट करो. आई से इट दिस वे, रैंडमली आपने पॉलिसी से शुरू हुए, वहां पे वैल्यूज कंप्यूट करो, वहां पे वैल्यूज कंप्यूट करो. राइट, यू स्टार्टेड विद रैंडम पॉलिसी, किसी एक स्टेट में आप बोल रहे थे नॉर्थ जाना है मेरे को. यू कंप्यूट वैल्यूज एंड यू फाइंड आउट कि नॉर्थ नहीं, प्रोबेबली ईस्ट वाज द बेस्ट एक्शन टू टेक. सो यू इंप्रूव और यू अपडेट. दिस इज ऑल इट इज सेइंग. यू आर टेकिंग नॉर्थ, आपने वैल्यूज कंप्यूट की, वैल्यूज टेल यू कि डोंट टेक नॉर्थ, टेक east from here, west from here, whatever. Okay, and then again these equations they stay the same because one step look ahead. What is pi I plus 1 now? इन दोनों notations में क्या difference है? This one is giving you value but this one is giving the action for particular state S. अब उसको अपन ने pi I को pi I plus 1 क्यों कर दिया है? राइट, सो नाउ मोस्ट लाइकली यू हैव चेंज्ड दी पॉलिसी. तो आपके पाई आई जो भी पॉलिसी थी पिछली इटरेशन में, इट्स नॉट द सेम एनीमोर बिकॉज आपने कहीं ना कहीं पे तो एक्शंस को चेंज किया होगा ना अपने सही वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग. ओके, सो यू हैव चेंज दी पॉलिसी इटसेल्फ. क्वेश्चंस हियर नाउ. एग्जाम्पल इज वॉट वी वर टॉकिंग अबाउट. ये जो मैं बोल रहा था ना कि फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड विद रैंडम पॉलिसी. सो लेट्स से इन दिस स्टेट माय रैंडम पॉलिसी सेज गो नॉर्थ. आई कंप्यूट वैल्यूज एंड इट टर्न्स आउट आई शुड नॉट गो नॉर्थ, आई शुड गो ईस्ट. वो वैल्यू कम आएगी, नेगेटिव आएगी, ऐसा कुछ आएगा ना? वो वैल्यू, दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी, सो क्यू स्टार इस साइड का मैक्सिमम होगा कंपेयर टू दिस साइड का. Actions For some states in policy iteration, like for example, I only want to go north, so I will be calculating value of north. right. How will I get to नहीं know that? नहीं 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 नहीं. See, you compute value of a state and value of a state depends on all the q states, right? So इस state में हूं, my policy was, because it was randomly chosen, so I don't really know what action is best. My policy actually asked me to go north. I compute values. Now this is much more robust. I compute values and my values tell me कि Q star SA is actually higher for east. So now I should update my policy कि मेरे को यहाँ से north में नहीं जाना, मेरे को यहाँ से east में जाना. With this deciding extra step, no, why don't we just calculate all the two values and take the max? Why do we need to redefine some actions? If we are comparing actions, because to compare it हाँ, right. So why are we stating policy beforehand? Right. Those three things again. Right? The max at each state rarely changes. आप ये कह रहे हो कि why are we not doing value iteration, we should just do value iteration instead of policy iteration. That's what you are saying. But we are saying you have three problems with value iteration. Okay? इसको एक बार छोड़ो, यहां पे देखो, max at each state rarely changes. यानी कि आपकी पॉलिसीज कम चेंज होती हैं कंपेयर टू वैल्यूज. द पॉलिसी ऑफन कन्वर्जेस लॉन्ग बिफोर द वैल्यूज. तो जब आपकी पॉलिसी पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी, even though values might be changing later. So what is better to do, policy iteration or value iteration? Okay, right. So both value iteration and policy iteration compute the same thing,
right? That same Bellman equations. In value iteration, every iteration updates both the values and implicitly the policy. We don't track policy, but taking max over actions implicitly recomputes it. भाई वैल्यू इटरेशन में भी तो आप पॉलिसी कंप्यूट कर ही रहे हो ना. इन फर्स्ट इटरेशन यू हैव सम वैल्यूज, दैट मींस यू हैव क्यू स्टार वैल्यूज. सो आप उससे पॉलिसी हमेशा निकाल सकते हो ना. सो नेक्स्ट स्टेप में जब नेक्स्ट इटरेशन में गए, वैल्यूज चेंज हुई, अगर पॉलिसी चेंज हो रही है तो आप पॉलिसी वापस निकाल सकते हो ना. सो यूजिंग वी वैल्यूज यू कैन ऑलवेज कंप्यूट दी पॉलिसी, राइट. एस स्क्वायर, हाँ. नहीं, एक्चुअली पॉलिसी में ए गोज अवे बिकॉज एट एवरी स्टेट एक्शन इज फिक्स्ड. At every stage you are computing the, I don't get this. Right. उस पॉलिसी को अपन अपडेट करते जा रहे हैं वैल्यूज निकाल के. इस पॉलिसी में ये एक्शन लिया, आई हैव माई क्यू स्टार वैल्यूज, अब आप उन पे अपडेट करते रहो. आई डोंट गेट द क्वेश्चन, क्या बोल रही बार वापिस बोलना. मतलब पहले हमने वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर ली, राइट. नहीं, मैंने शुरुआत की एक रैंडम फिक्स्ड पॉलिसी से एंड आई एम अपडेटिंग दैट पॉलिसी यूजिंग बेलमैन इक्वेशंस. उससे वैल्यूज तो वैल्यूज हैं, they don't depend on what am I doing there. एक्शन से इधर आगे जाएगी, राइट. तो इसमें उस एक्शन के लिए, सो यू आर हियर, लेट्स गो बैक टू दैट इक्वेशन. हाँ, हमारे पास एक्शंस थे स्टार्टिंग में, एक्शन से वैल्यू कंप्यूट करी, राइट. एंड फिर वैल्यूज के So actions now change to pi is. It's not any action anymore. It is what pi suggests you to do. Okay. Now in policy iteration, we do several passes that update utilities with fixed policy. Each pass is fast because we consider only one action and not all of them. ये अपने order n square वाली. After the policy is evaluated, a new policy is chosen. Slow like value iteration pass. The new policy will be better, or we are done. So once you have converged to a policy, that is what we were looking for. Both are dynamic programs for solving MDPs working on the same equations. Okay, more questions here. like when we are doing policy iteration, we are finding out, we are fixing a policy and then finding out that we are again finding the policy and then You are improving the policy. Huh. so instead of finding out the values from the policy, from the previous policy which we are having, can't be directly compared to policy. कैसे करोगे? सी कंपैरिजन के लिए ही तो आपको वैल्यूज चाहिए थी, एल्स तो मेरे को वैल्यूज चाहिए ही नहीं. एल्स तो माय आउटपुट इज जस्ट अ पॉलिसी. बट हाउ डू आई कंपेयर टू पॉलिसीज इफ आई डोंट हैव वैल्यूज फॉर माय स्टेट्स? All right, chalo. So MDPs are done. So you want to compute optimal values, use value iteration or policy iteration. Compute values for a particular policy, use policy evaluation. Turn your values into a policy, use policy extraction, one step look ahead. These all look the same, they basically are, and they are all variations of Bellman updates. They all use one step look ahead expecting X fragments.
They differ only in whether you plug in fixed policy or max over actions. Now what is this slide saying? In particular this part. We have been talking about that they are all coming from the same Bellman equations. आप मेरे को एक बात बताओ, what is this part? What is this look ahead expect, I mean sorry, not look ahead, one step look ahead. S, then Q values and then S star. This is what it is. Because आप कहीं पे भी कोई वैल्यू कंप्यूट कर रहे हो, यू आर गोइंग टू कंप्यूट इट इन टर्म्स ऑफ एस प्राइम. ओके, एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस ऑन एनी ऑफ इट? इसमें क्या क्या क्वांटिटीज हैं? स्टेट्स हैं, एक्शंस है, सो रिवॉर्ड्स हैं and probabilities hai, right? So now let's continue. So here they have this game. This is blue machine. You push this lever and you get $1. This one you push the lever and either you get $2 or 0. What will you do? एक बार देखो स्टेट डायग्राम पे एंड टेल मी व्हाट विल यू डू. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई मीन बिफोर इवन लेट्स से आई गो देयर, जस्ट लुक एट हियर. दिस इज द एजेंट. लेट्स से यू कैन प्ले फॉर 100 राउंड्स. You can play for 100 rounds. Now when we say maximize your expected utility, I want to make the maximum money here. How should I play? All right. आंसर मत देना शुरू में, जस्ट रेज योर हैंड्स. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं ब्लू पे हूं, सो लेट्स से आई एम इन दिस स्टेट ऑफ विनिंग. मैं ब्लू पे हूं. इफ आई कीप ऑन डूइंग ब्लू फॉर 100 राउंड्स आई विल गेट $100. तो $100 तो अगर इफ आई एम ऑलवेज डूइंग ब्लू देन $100 आर फिक्स्ड. अब एक बार रेड पे आ जाओ. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ये दिख रहा है. ऑप्टिमल निकालना इज व्हाट इज ऑप्टिमल हियर? रेड मशीन और ब्लू मशीन? हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स. रेड करने का क्या मतलब है? $150, राइट? सो एज सिंपल एज दिस. इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं थी. बट आई मीन ऑफ कोर्स स्टेट डायग्राम इज दैट मच कॉम्प्लिकेटेड. ये इधर से उधर ट्रांजिशंस क्यों है? ये जो इधर से उधर ट्रांजिशंस है वो क्यों है? सो नाउ नोट हियर, नो डिस्काउंट. $150 actually means $150 right now or later. Okay, 100 time steps, both states have the same value. ब्लू एंड रेड कलर्स का मतलब समझाओगे मेरे को? ये स्टेट डायग्राम समझाओगे मेरे को? बिकॉज यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम एक्चुअली करेक्टली. तो थोड़ा समझाओगे? देखो, एक्शंस ब्लू एंड रेड, स्टेट्स विन एंड लूज. विन एंड लूज. Actions are blue and red.
you have two possible like outcomes. Right. You land on red itself or you go to the loose state. Right. If you take the first option, it is 100% chance that you will land on itself. Right. So that is the win part. सी ये गेम का स्टेट डायग्राम है. गेम में क्या चल रहा है? यू पुल दी ब्लू लीवर एक बार, दो बार, तीन बार. व्हाट एम आई डूइंग? दिस लूप. ओके, दिस ब्लू लूप. नाउ इफ आई एम जस्ट प्लेइंग ऑन द रेड, देन आई एम ऑन दिस either this loop or this loop. Okay, now tell me, no sorry, not either, either this or that. Now या तो I will choose blue या I will choose red and I will get corresponding rewards. Okay, if I choose red, the probability that I will get $2 is 0.75. so if I just keep on doing that 100 times, if I do that, what I am going to make is 150.7 into 0.75 into 200. Okay, so this is fine. So solving MDPs is offline planning. Offline. What you just did here was you solved this MDP. So इसके लिए आपको बेलमैन इक्वेशंस की और इन सब की जरूरत नहीं थी. You solved this MDP, you got the best number out there. Now you determine all quantities through computation. You need to know the details of the MDP. You don't actually play the game. So given this state transition diagram, all information is given to you. आपने कोई गेम नहीं खेला, आपने एक्चुअल में जाके कोई लीवर नहीं दबाए, right? This was just computations. Okay, so this is here you have it. So important is you do not actually play the game. Now let's play. So पहली बार, so अब एक बार attention here. You pull the red lever, you get $2. Okay, so एकदम starting से करते हैं. You are agent, you are supposed to play this game. You choose red, $2. What do I do next? What do we do next? But we are playing this game, blue machine or red machine. Right now, this one. What do we do next? Red. फाइन. देखो उसके बारे में बाद में बात करेंगे. अभी एक बात बताओ. यू नो दिस इज $2, $0, दिस इज $1. Okay, I mean of course you can go for blue, that's fine, but let's say we choose red. Red again. Now what do we do? So keep on doing whatever. What happened in this? So you got 12 out of 10. मतलब $12 instead of. भाई एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था if वो प्रोबेबिलिटी से निकलता तो 15. भाई आफ्टर 10 इटरेशंस यू शुड हैव मेड 15.75 थी ना प्रोबेबिलिटी, लेकिन अभी हमको प्रोबेबिलिटी नहीं पता. एंड दीज आर, सो एक बार बताओ, इवन इफ प्रोबेबिलिटी इज 0.75, कैन आई स्टिल गेट दिस वन, आई मीन 12? If my probability of transition and getting 2 is 0.75, can I still get $12 here after 10 iterations? Yes or no? Yes. So why not 15? 15 was the expected value, but here you are actually sampling, right? So this is what you get is what you get. सारे जीरो भी आ सकते थे क्या? But the probability of happening that event is very low because 0.25 to the power 10, right? So that's very low but still possible.
What are we doing in this game now? We are filling the probabilities. So you don't know the probabilities कि कितनी probability से 0 आएगा, कितनी probability से 2 आएगा. What do we do now? How do you solve this now? Can you use Bellman equations? Can you use Bellman equations now? Why not? Because you don't know the probabilities. Okay? Okay? So 0 0 0 0 0 0 I mean कितने डॉलर मिले इसमें? 4. बेटर क्या होता? बेटर होता कि आई वुड गो फॉर दिस वन, दैट विल मेक मी $10, right? But why did we just do this? What is the difference between MDPs? What we are seeing here is RL, right? So what is the difference between MDPs and reinforcement learning? MDPs में all the information is provided to us. You can just compute things and get the maximize expected utility because everything was given to you. अभी यहाँ पे इस particular action में अपने को क्या नहीं पता इस particular game में? इस गेम में आपको ये नहीं पता कि रेड मशीन में 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है और 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है. अब लेट्स से अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन डायग्राम पे जाओगे, you still, what do you know from this particular diagram? Blue will always give you $1. Okay, but इसको भी एक बार और कॉम्प्लिकेटेड कर दो. यू इवन डोंट नो कि ब्लू इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू. सो लेट्स से मार्क क्वेश्चन मार्क्स हियर एज वेल. ओके, और कैसे कॉम्प्लिकेट कर सकते हो इसको? सो यू डोंट इवन नो कि रिवॉर्ड्स क्या है. नहीं, so now let's say you actually want to go and play this game and you have absolutely no idea कि which machine is good. How are you going to figure out? 10 times you will try that machine, 10 times you will try that machine. You are getting thinker. So that 10 is maybe good for you, right? Someone else will choose a different number, right? So nothing special with this 10. What you will actually do? Actually play the game. एक बार बताओ, एक दो बार लीवर प्रेस करने से इज दैट सफिशिएंट? यू नीड टू डू इट लॉन्ग इनफ, राइट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. ओके, सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे.